Look at page number 38. Now tenses, which is one of the most important topics of grammar. Part A. Rewrite the following sentences using the tense indicated in the brackets. अब आप देखें कि इन सेंटेंसेस के साथ पैरेंथेसिस में मेंशन किया गया है कि आपने जो फर्स्ट सेंटेंस है इसको आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है. तो फर्स्ट वन इज़ ही विल डू हिज वर्क विद डिलीजेंस. तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, और आप जानते हैं कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई सिंगुलर नाउन है और जो है ही शी इट, इसके साथ जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं तो एस और एस को ऐड करते हैं. ओके, सो ही डज़ हिज वर्क विद डिलीजेंस. ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इसको इस तरह से चेंज करेंगे, ही डज़ हिज वर्क विद डिलीजेंस. नंबर 2 इज़ आई फॉलोड हिज इंस्ट्रक्शन. अब इस सेंटेंस को सिंपल फ्यूचर टेंस में चेंज करना है. सो आई विल फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन. ओके, फॉलोड जो कि अब ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस में आई विल फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस. नंबर 3 इज़ दैट विल बी इंटरेस्टिंग. अब ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है, सिंपल फ्यूचर टेंस में है और अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन हमने इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ चेंज करना है. ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड देन कम्स ऑब्जेक्ट. ओके, सो दैट विल बी इंटरेस्टिंग, दैट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. ओके, सिंपल सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इसको इस तरह से लिखेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. नेक्स्ट इज़ आई विल नॉट अलाउ दिस टू हैपन. इस सेंटेंस को, ये सेंटेंस अब हमारे पास जो है फ्यूचर नेगेटिव में है और इसको सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है. सो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है. अब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट यूज़ किया जाता है. ओके, सो आई डिड नॉट अलाउ दिस टू हैपन. ओके, तो आप जानते हैं कि जब हम डिड नॉट यूज़ करते हैं तो उसके बाद भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. ओके, नेक्स्ट वन इज़ ही वर्कड वेरी हार्ड. अब इस सेंटेंस को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है. ही वर्कड वेरी हार्ड, ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है, ही विल वर्क वेरी हार्ड. ओके, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम इसको इस तरह से चेंज करेंगे. नेक्स्ट इज़ आई विल नेवर रेज एनी डिमांड. ओके, अब ये सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में है और प्रेजेंट परफेक्ट में अगर हम इसको चेंज करें तो आई हैव नेवर रेज्ड एनी डिमांड. ओके, आई हैव नेवर रेज्ड एनी डिमांड. ओके, नेक्स्ट नंबर 7 इज़ ही इज़ क्राइंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस. अब इस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है और पास्ट परफेक्ट की कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है. सबसे पहले जो है सब्जेक्ट होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन कम्स ऑब्जेक्ट. ओके, सो ही हैड क्राइड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस. ओके, पास्ट परफेक्ट में इस तरह से चेंज हो जाएगा. नंबर 8 इज़ वी बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट. अब ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और इसको चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कंस्ट्रक्शन किस तरह है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है हैज़ हैव. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव यूज़ करना होता है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट. ओके, तो अब इस सेंटेंस को अगर हम चेंज करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, वी बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, वी हैव बॉट vegetables from the market. Next part B is fill in the correct form of the verb. My friend Hashim has always been fat but things get, okay, parenthesis में यहाँ पे verb given है get, so bad recently that he decided to go on a diet but things got so bad. okay, मैंने इसको already fill किया हुआ है. Next sentence is he began his diet a week ago. First of all, he wrote out a long list of all the foods which were forbidden. The list included most of the food he loved: butter, potatoes, rice, cold drink, chocolate,
sweets and so on. Yesterday I our paid channel. him a Please do visit. I subscribe it. rang the And bell see you and in my was not next video. surprised to see Take care. Hashim Allah Hafiz. as fat as ever. He led me to his room and hurriedly hid a large parcel under his desk. He was very embarrassed when I asked him what he did. He smiled guiltily and then put the parcel on the desk. He showed me the contents of the parcel. It contained 5 large bars of chocolate and 3 bags of. Next is Part A. Choose the correct answer. Number 1 is I love this writer's books. I have been reading or I had been reading them for years. अब इसमें से कौन सा ठीक है? I have been reading. आपने सेंटेंस में वर्ब की फॉर्म को देखना है. अगर वर्ब की फॉर्म जो है फर्स्ट फॉर्म है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए आई लव दिस राइटर्स बुक. ओके, लव इज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. सो अकॉर्डिंग टू दिस आपने जो है जो प्रेजेंट टेंस में है आई हैव बीन रीडिंग, इसको चूज़ करना है. ओके, अगर वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में होगा तो तब आप हैड बीन चूज़ करेंगे. Next is his clothes were dirty because he has been working or had been working in the garden. Okay, अब इस सेंटेंस में were dirty. Okay, अब ये सेंटेंस past tense में है तो had been working in the garden. Next is where have you been? We had been waiting or have been waiting for you for ages. अब यहाँ present के बारे में बात हो रही है. So we have been waiting for you for ages. Number 4 is he hasn't decided on a career yet, but he has been thinking or had been thinking about it lately. Okay, he hasn't decided. तो ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस में है तो हम यहाँ पे बट ही हैज़ बीन थिंकिंग, इसको चूज़ करेंगे. नंबर 5 इज़ आफ्टर शी हैज़ बीन प्लेइंग और हैड बीन प्लेइंग द टेनिस फॉर 10 years शी जॉइंड अ स्क्वाश टीम. ओके, अब ये सेंटेंस शी जॉइंड अ स्क्वाश टीम ये पास्ट टेंस में है तो हैड बीन प्लेइंग. पार्ट बी इज़ complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. Use the present perfect continuous or the past perfect continuous. अब ये एक्सरसाइज भी टेंसेस के बारे में है. आपने टेंसेस पढ़े हैं तो आप इसको इजीली कर सकते हैं. नंबर 1 इज़ नबील हैज़ नेवर हैड एन एक्सीडेंट एंड ही हैज़ बीन ड्राइविंग फॉर years. Next is she had no idea it was so late because she hadn't been watching the time. Next is have you been taking your medicine regularly? Mrs. Sami, yes, doctor. Number 4 is they eventually found the dog after they had been looking for it all night. Number 5 is how long had your father been working for the company when he retired? Next part C is complete the sentences with a suitable word or expression. यहाँ पे बॉक्सेस में कुछ एक्सप्रेशन गिवन हैं, आपने उनको सही जगह पे इन ब्लैंक्स में फिल करना है. First one is our TV has not been working since last week. The Khans invited us to dinner although we had only met the week before. Number 3 is they will have finished painting the house by tomorrow. We had been writing for nearly an hour when the bell rang. Number 5 is they have interviewed 3 suspects so far. Part D is correct the errors in the following sentences. Next part is correct the errors in the following sentences. First one is Jamila has lost weight. She had been dieting for months now. अब ये सेंटेंस बहुत ही ईजी है, आपने इसमें मिस्टेक को फाइंड आउट करना है. अब फर्स्ट सेंटेंस अगर आप देखें जमीला हैज़ लॉस्ट वेट तो ये हमारे पास प्रेजेंट टेंस में है तो नेक्स्ट को भी प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए. शी हैड बीन. ओके, तो आप यहाँ पे हैड गलत है, हैज़ बीन डाइटिंग फॉर मंथ्स नाउ. ओके, तो यहाँ पे हम हैज़ यूज़ करेंगे, हैज़ बीन डाइटिंग. नंबर 2 इज़ एवरीथिंग वॉज वाइट व्हेन वी वोक अप बिकॉज इट हैज़ बीन स्नोइंग ऑल नाइट. तो अब ये सेंटेंस अगर आप स्टार में देखें तो ये पास्ट टेंस में है तो यहाँ भी इट हैज़ बीन
की जगह had been snowing all night. Number third is I was so happy when I received the gold medal. I has been okay I had been working hard for years, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है. सो हैज़ की जगह I had been working. Okay. Number four is the upcoming test is making me nervous. I had been preparing all evening. अब ये सेंटेंस भी, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये प्रेजेंट टेंस में है, तो आई हैड बीन की जगह हम आई हैव बीन प्रिपेयरिंग ऑल इवनिंग यूज़ करेंगे. नंबर फाइव इज़ वी हैव बीन राइटिंग सिंस नियरली एन आवर व्हेन द बेल रिंग. नंबर फाइव में देखिए अगर आप इसमें तो हैव बीन है ये सेंटेंस. ओके. तो और जो है व्हेन द बेल रिंग, अब ये जो वर्ब है ये पास्ट टेंस में है, तो हम यहाँ पे हैव बीन की जगह हैड बीन यूज़ करेंगे. ओके. वी हैड बीन राइटिंग फॉर नियरली एन आवर व्हेन द बेल रिंग. ओके, दैट्स इट. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.